From here, we are getting two values of x. What are the two values of x? -1 and 4. So I got x equals to -1 and x equals to 4. So my answers for the x-intercepts are ready. Okay, so that's your second thing in the graph. So we'll write, so in this case, what are the answers for you? Ye shape aa gaya, factorize karne ke बाद y0 karne ke बाद, what are the answers? -1 and 4. एक -1 है और एक 4 है, ठीक है? अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, that is you have to find the y-intercept. For finding y-intercept, you have to put x equals to 0, ठीक है? And find y. So ठीक है? -4. So which is always the constant. Yeah, -4. Always the constant. So in this case, it is equal to, it's equal to -4. -4. अब आते हैं लास्ट में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम दो तरीके से निकालते हैं. एक आपको याद है, आपने पहले एक मेथड किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है? एक हमारे पास जो उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, वहां जो x की वैल्यू आती है ना, दैट इज योर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. नहीं तो ये जो दो x की वैल्यूज हैं, इनका हाफ, इनको ऐड करो, इसका हाफ कर दो. हाँ, दैट्स ऑल, ठीक है? दैट्स हाउ यू गेट योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो यहाँ पर क्या आया, -1 + 4 divided by 2, which is equal to 3/2, which is equal to 1.5. अब मुझे मेरे ग्राफ को स्केच करने के लिए जितनी चीजें चाहिए, I got everything. I've got everything. I know the shape, I know the y-intercepts, I know the x-intercept, I know the axis of symmetry. So let's do it now. So let's draw the graph. What is my axis of symmetry? Sorry, what is my shape? Shape, I know it's a happy face. What's the y-intercept? -4. -4. What's the x-intercept? 4 and -1. -1 and 4. Okay. What is the axis of symmetry? 1.5. 1.5. So now I will roughly draw my graph, attach this. So this will be the minimum point. Axis of symmetry will always be the minimum or the maximum point. So this and वहां से turning, उसी को minimum point बोलते हैं, यहीं से turning point Has to बोलते be हैं. at -4, right? What? The x in, oh no, the y-intercept is at -4. No. Did you get this? Yeah. At this is your axis of symmetry. Okay, x equals to -1.5 and then the rest of the thing. Is it clear? Yeah. Okay. Next question says find the axis of crossing the graph and all of that. It is asked. We have done it. Sketching भी हो गया. अब वो कहते हैं minimum point निकालो. Minimum point निकालने के लिए we got x, क्योंकि हमें कहाँ से axis of symmetry से x की value मिली. Remember this is x value. y कैसे निकालूं मैं? y कैसे निकालूं? Y is equal to whatever. So ये जो x की value है, you will put it in this equation, right? So what do you get? 1.5 का square -3 into 1.5 -4. Answer would be -6.25. So you will write -1.5, -6.25. Understood? कैसे करना है? So this will give you the coordinates for the axis of symmetry. Otherwise, आप जो completing the square method कर रहे थे, वहां से भी आपको एक्सेस, वहां से भी आपको मिनिमम पॉइंट के पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है? सो सपोज मेरे पास जब आपने इसको स्प्लिट किया, जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, सपोज आंसर आया x - 2 होल स्क्वायर -3. सो मिनिमम पॉइंट इज 2, -3. Oh, okay. Understood? So we will be using this at a lot of places. So it's -b and c, right? हाँ, it's always the value for जो x है उसको आपको हमेशा चेंज करना होगा and then, ठीक है? Got it. It's not -b and c, it's -b/2 upon c and c. Yeah. So the value you get in the bracket का minus and बाहर value का c. That's it. हाँ, ठीक है? Now, last question. It says find the range of this. Range is, you know what is the domain and range? Yeah. Domain क्या होता है? X value. Domain is all x values, all x, and range is all Y values. All y.
अब मुझे इस ग्राफ को देख के बताओ, हमने ग्राफ जो बनाया, लुक एट दिस ग्राफ, इस ग्राफ को देख के बताओ y वैल्यूज क्या है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबव -6.25. हाँ. तो जो ये जो टर्निंग पॉइंट है, द टर्निंग पॉइंट वाज it was 1.5 comma -6.25. So everything and anything above 6.25 -6.25, that's your range. So that's what you write here as the answer. That becomes it. Range is x is Range is all y values above 6.25, क्योंकि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, नीचे नहीं आ रहा ना. 6.25 से ज्यादा ही वैल्यू है ना, जितने भी y वैल्यूज है ना. तो your y is everything above -6.25, including 6.25, -6.25. yes. ठीक है, समझ में आया ये सब कुछ? हाँ. अब आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो पहले सीखा ही है, राइट? सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम इससे और एडवांस क्वेश्चन लेते हैं. जैसे ये क्वेश्चन आया, नाउ हैव अ लुक. द क्वेश्चन विल टेल यू, चलो इसका पहला वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे. द क्वेश्चन टेल्स यू express this in the form of this, where P, Q, and R are constants, whatever, right? And then it will ask you to figure out the value of the turning points. Okay? So like I said, we are going to use this method quite a lot. So 2x square minus 4x plus 5. ठीक है? ऐसे में क्या करना है? ये completing the square method है हमारा. इसमें हम क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे. Yeah. बन जाएगा x square. ये बन जाएगा 2x plus, and this will become 5/2. Yeah. Now 2 को भूल जाओ. 2 becomes here. 2 is here. We have to have the 5 inside. Yeah, you can. There are 2 ways. Either you keep the 5 outside. अब bracket से ही बाहर रखते हो इसको. तो या फिर outside is easier ना? हाँ. Outside should be easier. Whatever you find easy. मुझे चाहिए कि कई बच्चे इसमें मेथड में कंफ्यूज होते हैं. So I take common from everything. I teach it like this only. Because otherwise confusion होती है कई बच्चों को. कभी भूल जाते हैं, कभी रख लेते हैं. इसलिए better to take common when you're taking common. क्या common from everything. Okay. Now the equation is not. You forget about this 2. The equation is this. So what is your b? B is -2. So what will be b by 2? It will be -2 upon 2, which is equals to -1, right? So now it becomes 2x minus 1 whole square. 2 के बाहर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे. x minus 1 whole square minus of -1 square plus 5/2. Yeah, I know. Okay. Now it becomes, we will open the bracket. It becomes 2x minus 1 whole square. 3/5. ये हो जाएगा -1 का square is 1 only, and this 2 से multiply होगा तो -2. कैसे? Plus 5. देखो, -1 का square is 1, and when you open the bracket, it will get multiplied na by 2. Oh, okay. So right? basically we have to find whatever you got uska square and then minus that from the equation. Right. Okay. And because इसमें coefficient था शुरू में, a value थी, so you have to multiply everything by a at the end. Okay, I'll keep the brackets actually. I'll keep the 5/2 inside. It is better to keep, क्योंकि वो फिर confusion होता है, किसमें रखूं किसमें नहीं रखूं, आप उसमें mess up हो जाता है चीजें. It's better to take everything common. अब देखो ओपन कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो 2 से कैंसिल हो जाता है. सो डजंट मैटर एक्चुअली, है ना. तो ब्रैकेट के अंदर रख लेना बेटर है, ताकि सिली मिस्टेक ना. x minus 1 whole square, ये क्या हो गया? -2 plus 5 is +3. So what are the turning points? इसका मतलब अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बन रही है? So it's 1,3. Because 2 is positive, so happy face. And minimum point है, so it become 1,3. Oh, we found everything from this. Then we found the turning point in this straight away, x intercept we found. Right. अब जरा अपने इक्वेशन से मैच करते हैं इसको. So you tell me, ये कह रहा है कि p q के फॉर्म में बताने के लिए. So what is p in this case? ये p क्या है? Yeah, it is in plus. So 2x minus 1 square plus 3. So we got it right. p is 2.
Q Yeah. is, match it. ये Q है. Q is 1. Q is 1 and X is R 1 is 3. and R is 3. ठीक है ना? When you Yeah. match it with this. समझ आ गया ये method? Got it. Very good. See, the axis of symmetry you got. So sketching करते time हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? Shape, then y-intercept, Intercept, y-intercept, and the axis value, whatever. axis of symmetry, right? Axis. Okay. अब वो बोल रहा है जरा now here it is going to asking you everything that we have learned. It says 2 plus this. अब ये पूरा equation को उसने उल्टा कर दिया, ठीक है ना? तो घबराने की बात नहीं है. It's same as the same. Yeah, I know. So You you do the same thing, only completing the square method, and you बस completing the square method करके end value you have to get. That's all. end value को आपने क्या करना है? And then you have to sketch the graph. Whatever. चलो तो इसको इस क्वेश्चन को फटाफट करो. Quickly do it. Quickly do it. Got the answer. So the answer? Tell me. A is 10, B is 2, C is -2. A is 10. Let me check. A is 10. Can you tell me again? अपना equation बता दो मुझे जरा. So it was -2 big bracket, x -2 small bracket में square, -4 -1 big bracket close. That's basically -4 -2 -1. So it becomes -10, right? +10. +10. +10. That's okay. So now we will compare. A is 10, B is -10. Perfect. So even if they change the order, but we know the method, if we know the concept, we can do it. इसने ABC सब उलट पलट कर दिया हमारे लिए, राइट? हमारे दिमाग में ABC तो कुछ और है स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से, और इसने उलट पलट कर दिया. सो इट डजंट मैटर, राइट? इफ यू नो द कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व इट, राइट? सो ये A हो गया, दिस इज योर B and this is your C, right? Answer is right, no? Yes, answer is right. ठीक है. So we found Now tell me. Now that you know this much, so looking at the graph, you need to sketch the graph. So you have to tell me the shape. So,
and everything that you need for the graph. Tell me, how would you sketch this graph? And also the range. Okay, so basically our shape is negative, so we have a maximum point. Okay, we have a sad face, so we will have a maximum point. So the turning point is a maximum point. Okay. Yeah. So Then x that's your intercept we shape. have to find. So find everything now. X intercept, y intercept, सब निकालो. Okay, y intercept. Okay, no wait. So our maximum point first is 2, 10. So 2, 10. Okay, very good. Now our x intercept. How do we find x intercept from this? X intercept में y0 put करते हैं, y intercept में x0 put करते हैं. So the minus 2x square plus 8x plus 2 वाली equation से लेना है ना जो भी है. Right. हाँ, okay. So for x we find, wait, quadratic है ना ये? Yeah. Do the 4 steps. You want to see? You've written the question. Do I show you the steps that you learned? हाँ. No, I remember. तो अभी quadratic solve करके x अब मिलेंगे अपने 2. ये 4 और steps. y is constant which is 2. Y intercept is 2. Y intercept is 2. Okay, चलो आते हैं. Yeah, your y intercept is 2. Very good. Okay. Kara, how many questions you've done till now? 10. Huh? 10. 10. Yes, Shamik done. Kind of. I got one x value minus 0.24. किसकी वैल्यूज है ये? X intercept. Okay, रूट में आ रहा है क्या? Root 80 plus minus 8. Root 80. root 80 plus minus 8. Okay. क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा. What are the values that you got getting? Oh, minus 8 plus
8.94 upon -4 minus 8 minus 8.94 upon -4. तो अच्छा, तो वैल्यू बताओ मुझे फाइनल आंसर. एक सेकंड. Kyra, I think you got disconnected from the other device. Yes, my mom needed the phone. Trisha, how many questions done till now? I'm on the 15th question. Okay. Are you feeling a little more confident than the last paper? Yes. So one value is 4.23, and then Okay. And the other value is? 1 second. Minus 0.23. So Perfect answer. Very good. Now, Shamik, so you found out so many things already, right? You found out the shape, you found out the axis of symmetry, you found out the y-intercept, and you found the x-intercept. Sketch हो जाएगा graph? हाँ. 4 चीजें चाहिए हमें, चारों से हमारा sketch हो जाएगा graph. So let's Yeah. do it together. ठीक है? तो मुझे बताओ, based on whatever values you've got, let's figure it out. मुझे बताओ पहले x-intercept क्या क्या है आपका? Minus 0.23 and 4.23. Minus 0.23 will be somewhere here. Minus 0.23 and 4.23 will be somewhere काफी दूर पे. So 4.23. ठीक है? Then what else? What is the y-intercept? 1 second. Y-intercept is 2. Y-intercept is 2. Okay, so somewhere here. And then what is the topmost point? Because 2, 10. 2, 10. So somewhere here would be 2 in between them. This will be 2. So somewhere here, this should be 2, 10. I'm just doing, because it's just a sketch. Sketch, yeah. Yeah, so we are just doing it roughly, right? Now we will join these, right? Whatever we got, we are going to join these. So यहाँ से यहाँ, so you have to be, मतलब जब we are draw, आपको ये एक roughly ही बनाना है, but shape थोड़ी proper आनी चाहिए. तो yeah. So like this, and so जैसे मेरा proper नहीं आ रहा shape, ठीक है? This is not a proper shape that I should be getting. So it's kind of like, okay, that's how your graph will look like. Clear now? Got it. Very good. अब आगे है sketching of the graphs. To sketch this graph, y is equal to this. Okay. You're supposed to sketch the graph. Same thing, x square minus 2x minus 3. ठीक है? But there is a modulus written ahead. है ना? एक modulus बन गया है. और do you see that? Y is equal to this, but साथ में एक modulus का sign लग गया. Correct? Right, Shamik? Yeah, I know how to do this. तो अब क्या करेंगे? First you sketch this, then reflect in the x-axis the part of the curve that is below the x-axis. मतलब नीचे का part ऊपर कर देना है. जो भी नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा. Right? Mirror करना है ना उसको. Mirror करना है. But everything which is just below. So Right. this is what you get as your graph. And what is below? ये वाला part नीचे है ना? इसको reflect कर देना है इस तरीके से. ऊपर की तरफ. So like, ठीक है? 1 minus 4 will be 1, 4. Correct. Got it? बाकी सब कुछ same. बाकी there is no change. बाकी everything is same. -1 as it is. सिर्फ ये वाला ये जो point था, this will come up. Clear? Yeah. तो easy है ना ये करना? Yeah, this is easy. Okay. अब आगे quadratic inequalities पे. All right. Inequality solve करना तो आता है हमें. Inequality solve करना आता है हमें, right? लेकिन quadratic inequalities कैसे solve करेंगे? ठीक है?
Method more or less is the same, We're except the finding last. a range, na? Huh? We are finding a range here, na? No. We are finding a range, right? We are finding, matlab that's a, this is called as the domain, not the range. X values are the domains. So based on not the English word range, right? In this topic, domain and range are two different things for us now. हम y values नहीं निकाल रहे, हम x की values निकाल रहे. So domain निकाल रहे जहां पर we are trying to find out कि जहां पर ये जो equation है that is greater than 0. Okay? बहुत आसान है, सब कुछ सेम करना है, बस अब वैसे ही सॉल्व करो जैसे आपने इक्वल्स टू 0 किया होता. x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आप कैसे सॉल्व करते? क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते. सो ये क्या बन जाता? x प्लस 1 x plus 1 and x minus 4. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते, यानी कि आपके x की क्या क्या वैल्यूज आ गई? x की वैल्यूज क्या क्या हो गई? x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 4. ये स्टेप हमको नहीं करना है इनइक्वालिटीज में. ठीक है, हम यहाँ पर आकर के रुक जाएंगे. x प्लस 1 एंड x माइनस 4 हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए. ठीक है, बट डोंट ट्राई टू डू व्हाट यू वर डूइंग फॉर इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो करते ही मार्क्स कट. ठीक है, अब हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप दो चीजें निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1 एंड 4. ठीक है, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 4, दीज आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स. तो आप क्या करोगे? वहां पे मार्किंग कर दोगे. 1 एंड 4 पे मार्किंग कर दिया, राइट? नाउ it says greater than 0. Everything which is above the x-axis, that is greater than 0. Everything which is above the x-axis, that is greater than 0. Everything which is below the x-axis, that is less than 0. Okay? Yeah. Right? तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर you have to choose your x value in such a way that answer हमेशा positive आना चाहिए. So इसका मतलब हुआ everything which is on this side and everything which is on this side. Okay, which means x is less than -1 positive. हाँ, वो बताते हो. x is less than -1 is not positive. लेकिन अगर x is less than -1, ध्यान से सुनना. सपोज मैं यहाँ पर -2, आपने मेरे हिसाब से मैंने -2 वैल्यू ले लिया, राइट? Now substitute this value. -2 plus 1, -2 minus 4. इसका आंसर क्या आया? -1. इसका आंसर क्या आया? -6. दोनों मिलकर के क्या बन गए? Greater than 0. So we are not trying to find out x का value. We are trying to find out those values जिसको लेने से मेरा overall answer 0 से बड़ा होना चाहिए. So we were doing this in class. So we had two different curves. Right. We had to find like a single value that was like right for both of them. Right. तो अभी ये समझ गए पहले इसको कैसे करना है? Kind of. Understood, right? अब एक और इक्वेशन लेके देते हैं. अब मैंने बोला मैंने ये वाला साइड भी शेड किया था, राइट? मैंने दूसरा साइड भी शेड किया. So the other side is x is greater than 4, right? मैंने ये साइड शेड किया, तो उसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं 5. Greater than 4 में हम 5 ले लेते हैं. 5 plus 1 and 5 minus 4. 5 plus 1 is 6. 5 minus 4 is 1. तो भी greater than 0 आंसर आ रहा है. लेकिन गलती से अगर हमने कोई बीच का पॉइंट ले लिया होता, anything which is lying in between them, तो मेरा आंसर क्या होता? Let's say 0. 0 is between them. So 0 plus 1, 0 minus 4. ये तो हो गया greater than 0 चाहिए था. This is 1 into -4. My answer is not correct because I'll get -4, which is greater than 0, isn't it? Yeah. -4 is lesser than 0. Right. तो इसलिए मेरा आंसर नहीं आया. So because I tried to take a value which is in between them. Right. ठीक है ना? Got it? Are we clear now? कैसे क्या करना है हमको? हाँ, तो फिर आंसर फाइनली क्या आता है?
आंसर फाइनली हमेशा जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जब भी आंसर निकालना होगा. द ट्रिक इज दैट यू टेक all the values see here. So it is greater than 0. हमेशा ऊपर के साइड के दोनों तरफ मार्क करना है. लेस देन 0 होगा तो नीचे के साइड के सब कुछ मार्क करना है. नीचे के साइड का अगर ये लेस देन 0 होता तो आई वुड हैव मार्क्ड दिस. इफ द क्वेश्चन वाज solving is same, if the question was less than 0 then I would have marked this area. ठीक है? Oh, हाँ, okay. So x The question is greater than less 0. than -1 and more than 4, right? That trick, that's your trick. वरना इसको समझाने का बहुत लंबा मेथड है. But हाँ. trick is this. Keep that in mind. इससे आपका क्वेश्चन फटाफट होएगा. हाँ, okay. Okay, that's I've given you a trick today. So if they've already given the graph, then it's very easy to find. Yes. Otherwise you can sketch your graph. You know how to sketch the graph. हाँ, correct. ठीक है? अच्छा, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? Little bit more. Are you able to understand this? Yeah, I got everything. You got everything ना? ठीक है. Yeah. Very nice. So Saturday या Sunday को होगी ना class? No, tomorrow.